Hello students and welcome to today's biology class. तो previous class में हमने discuss किया था about the disease malaria and we have seen the life cycle of Plasmodium. It occurs in two different phases. One phase in the human beings which is called as schizogony, and the other phase of its life cycle is completed in the mosquito's body which is called as porogony. Okay, तो चलो कुछ और वैसे common diseases के बारे में discuss करते हैं आज. So we will see into some of the common diseases, their causative agents and their symptoms. Okay, so let's begin. So besides malaria and all, there are certain common diseases which occur, and these diseases can be due to different parasites. One of such disease is Amoebic dysentery, also known as Amoebiasis. तो यहाँ पे स्टूडेंट्स देखो, एमोइबिक डिसेंट्री मतलब ये एमीबा रिलेटेड ऑर्गेनिज्म से होता है. इट्स नॉट बेसिकली एमीबा, एमीबा नहीं होता, उसका ही एक रिलेटेड ऑर्गेनिज्म होता है एंटामोइबा. एंटामोइबा हिस्टोलाइटिका, ये एक प्रोटोजोन है. दिस इज ए प्रोटोजोन सिमिलर टू दैट ऑफ एमीबा and this causes the disease called as amoebic dysentery or amoebiasis. This is how the organism looks like. ये माइक्रोस्कोपिक होता है, यूनिसेलुलर होता है, प्रोटोजोन है. ऑर्गन्स दैट इट इफेक्ट बेसिकली द लार्ज इंटेस्टाइन. तो यहाँ पे डिसेंट्री वर्ड हमने यूज किया, इससे ही आपको पता चल जाएगा कि ये इन्फेक्शन करता है इन द इंटेस्टाइन, स्पेसिफिकली द लार्ज इंटेस्टाइन्स, बिकॉज हमारा जो डिसेंट्री होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन के इफेक्टेड होने से होता है. ठीक है, दिस इज हाउ इट इज. द इंटेस्टाइन्स विल बी इफेक्टेड, दिस ऑर्गेनिज्म विल बी present in your gut. The mode of transmission, very common mode of transmission, contaminated food or water. तो ये जो ऑर्गेनिज्म होता है इसके स्पोरिक फॉर्म्स आपको कंटामिनेटेड वाटर या फिर कंटामिनेटेड फूड में मिल जाएंगे और वहीं से वो हमारे बॉडी में आ जाते हैं. समटाइम्स हाउस फ्लाइज कैन आल्सो एक्ट एज वेक्टर्स, बिकॉज हम लोग जानते हैं हाउस फ्लाइज दे मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस और वो बहुत सारे कंटामिनेटेड एरिया में भी मूव करते हैं. तो इफ दे कम एंड सिट ऑन योर फूड देन दे कैन ट्रांसमिट द डिजीज. सिम्टम्स, डिसेंट्री है तो लूज मोशन रहेगा, एब्डोमिनल पेन विल आल्सो बी ऑब्जर्व्ड, स्टूल विथ म्यूकस, समटाइम्स ब्लड विल आल्सो बी देयर, कॉन्स्टिपेशन माइट ऑकर, क्रैम्प्स. क्रैम्प्स मतलब आप जो बोलते हो कि पेट दर्द हो रहा है, पेट अंदर से ऐसा लगेगा कि यू विल फील लाइक द इंटरनल ऑर्गन्स आर ट्विस्टिंग, तो वैसा टाइप का एक पेन रहेगा, उसको क्रैम्प्स बोला जाता है. दैट इज कॉल्ड एज क्रैम्प्स. ओके, सो दीज आर द डिफरेंट सिम्टम्स यू विल फाइंड इन एमोबियासिस. नाउ द नेक्स्ट डिजीज, इट इज Ascariasis. तो ये भी कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म के ऊपर ही इसका नाम है. Ascaris lumbricoids is a causative organism. तो based on it the disease is called as Ascariasis. Ascaris is a nematode. Now this we have studied in class 11. जब हम लोग नेमाट हेलमिंथिस या फिर एस्कल हेलमिंथिस पढ़ रहे थे तो वहां पे हमने राउंड वर्म्स के बारे में डिस्कस किया था. Ascaris is a round worm. Okay, so this is how the organism looks like, and these nematodes can grow to around 10 to 12 centimeters long and they can live in your intestine. So that is a very troublesome kind of a situation. Generally they affect the intestines. Specifically अगर आप बोलो तो ज़्यादातर small intestine में होता है, but they can move on to the upper large intestine as well. So this kind of worms will be there in your intestine. These worms grow in your intestine, they take nutrition from it. तो ये parasitic होते हैं तो host body से ही वो लोग nutrition लेंगे. उनका मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो होता है इट इज थ्रू कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर. ना नॉर्मली क्या होता है, ये एस्कैरिस देखो जब ग्रो करते हैं इंटेस्टाइन में तो वो अपने लाइफ साइकिल में दे विल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग एग्स. इनका सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है तो दे स्टार्ट प्रोड्यूसिंग एग्स व्हिच आर रिलीज्ड इन द इंटेस्टाइन. नाउ इन थ्रू द लार्ज इंटेस्टाइन व्हेन द फीकल मैटर इज ट्रांसमिटेड, फीकल मैटर मतलब आपका स्टूल, जब स्टूल ट्रांसमिट होकर बाहर निकलता है तो along with the stool the eggs of this organism will come out and these eggs will contaminate the water or food and through that the disease can spread. ठीक है, so it is basically through contaminated water or food. Symptoms, internal bleeding हो सकता है, intestinal bleeding हो सकता है, blockage of intestines हो सकता है, fever might be there, muscle pain, fatigue, ये सब भी दिखाई दे सकता है because आपका intestine affected होता है. And this is the point that I was mentioning just before, कि eggs of the parasite are excreted along with the feces of the patient and then it can contaminate water and food. वो water और food को contaminate कर सकता है जिससे ये disease फिर spread हो जाता है. Next disease, it is called as filaria. Filaria or filariasis
और एलिफेंटियासिस. द कंडीशन इज समटाइम्स रेफर्ड टू एज एलिफेंटियासिस. अब इसको एलिफेंटियासिस इसलिए बोला जाता है बिकॉज जब ये डिजीज होता है द लेग्स, द लोअर एक्सट्रीमिटीज विल बी इफेक्टेड एंड दे विल अपीयर लाइक एलिफेंट लेग्स. इसका कॉजेटिव एजेंट होता है यू चेरेरिया बेनक्रॉफ्टी, यू चेरेरिया मलाई. दो स्पीसीज रेस्पॉन्सिबल होते हैं इस डिजीज के लिए. बोथ ऑफ देम आर नेमाटोड्स. ये नेमाटोड्स होते हैं सिमिलर टू दैट ऑफ योर राउंड वर्म. And this is how it looks like. This is the organism Euchereria. Now the organs affected are actually the lymph vessels and the lower limbs and genitals. तो यहाँ पे जो ऑर्गन्स इफेक्टेड होते हैं ये जनरली आपके लिम्फेटिक सिस्टम्स होते हैं, लिम्फेटिक सिस्टम ऑफ द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी. ये वाला पॉइंट आप लोग याद रखो स्टूडेंट्स. जनरली इट डज नॉट ऑकर ऑन द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी. ये लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी जैसे लेग्स हो गया, जेनाइटल्स मींस स्क्रोटम एंड ऑल वहां पे दिखाई देता है. And mode of transmission is through female Culex mosquito. So as like malaria, here also it is a mosquito only. It is female Culex mosquito. तो ये vector की तरह काम करता है. Now when this specific insect bites an infected person, तो उनके जो lymphatic fluid में आपके parasites होते हैं, they will come into the body of the mosquito. Then from the body of the mosquito, it will be transmitted to the next healthy individual. Quite similar life cycle that we have seen in case of malaria. Symptoms: chronic inflammation of the lower limbs and the genitals. Now this condition may persist throughout the lifetime. Okay, now this is how it looks like. तो ये एलिफेंट लेग जैसा हो जाता है पैर, इसीलिए इसको बोला जाता है एलिफेंटियासिस. यहाँ पे जो कंडीशन हमने मेंशन किया है एलिफेंटियासिस, because the legs will appear like elephant legs. Okay, next one, ringworms. Now ringworms, these are very common disease that you can see and they are basically fungal in origin. ये जो ringworms होते हैं ये fungal disease होते हैं. Different kinds of fungus can be responsible: microsporum, trichophyton, epidermophyton. This kind of different fungal species are responsible. Now on your screen this is microsporum. It is under the microscope it will look something like this. The organs affected are basically the surface like the skin, nails and groin. Groin मतलब आपका जो scrotum area होता है in case of male individuals, that is referred to as groin. So here you will find कि skin, nails and groin. हिंदी में आप इसको दांत बोलते हो. यू कॉल दिस स्पेसिफिक डिजीज एज दांत, so that you might understand कि स्किन के सरफेस में होता है, रेडिश पैचेस हो जाते हैं. मोड ऑफ ट्रांसमिशन फ्रॉम सॉइल, इट कैन बी ट्रांसमिटेड बिकॉज फंगस है तो दे विल बी फाउंड इन मॉइस्ट सॉइल. थ्रू कॉन्टामिनेटेड आर्टिकल्स लाइक क्लोथ्स, कोम एटसेट्रा. तो ये जो फंगल स्पोर्स होते हैं वो कॉन्टामिनेटेड आर्टिकल से भी स्प्रेड कर सकते हैं. डेली यूज आइटम्स होते हैं, डेली यूज आर्टिकल्स होते हैं जो हम लोग यूज करते हैं. वी यूज इट एंड द होल फैमिली यूजेस इट. घर पे ऐसे बहुत से आर्टिकल्स होते हैं जो फैमिली कॉमनली यूज करते हैं, तो वैसे में ट्रांसमिट हो सकता है फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर. सिम्टम्स: dry and scaly lesions and parts of the skin with itching sensation. तो there will be itching sensation और dry और scaly lesions होगा. lesions मतलब आप देखना वो एक specific area जब आप उसको थोड़ा scratch कर लेते हो तो वो reddish होके थोड़ा थोड़ा bleeding होने लगता है and वो एक itching sensation रहता है उसमें. तो that are called as lesions. उसको lesions बोला जाता है. Now this is how ringworm looks like. And from the picture you can know कि इसको रिंग वॉर्म क्यों बोला जाता है, because they appear in a circular pattern. वो लोग एक रिंग लाइक पैटर्न में appear करते हैं, इसीलिए इसको रिंग वॉर्म बोला जाता है. मेनली ऑन द सरफेस, बॉडी के अंदर के पार्ट्स में नहीं होता, सरफेस में ही होता है. Now next disease is dengue. Causative agent, it is dengue virus, also called as den virus. ठीक है, तो ये एक वायरस के चलते होता है डेंगू. इट इज नॉट सम काइंड ऑफ बैक्टीरियल और एनी अदर काइंड ऑफ डिजीज, मेनली बिकॉज ऑफ वायरस, दैट इज डेंगू वायरस और डेन वायरस. Mode of transmission. Now here also one female is mosquito is responsible, but female Aedes mosquito. देखो यहाँ पे mosquitoes vector की तरह काम करते हैं in most of the disease, but species vary होगा because you'll find कि हर एक parasite का अपना mode of transmission अलग अलग रहता है. तो इसीलिए यहाँ पे female Aedes mosquito responsible होता है, वो vector की तरह काम करता है and that will transmit the disease from one person to another. Now the symptoms are high fever, muscle pain, joint pain, rashes, headache, sometimes in serious condition bleeding, internal bleeding, and if untreated it can lead to death. Because of internal bleeding अगर treatment नहीं होता है तो that might lead to death. And this is also very common disease in India. आपको मिल जाएगा ये. Eye pain will be there, headache will be there, rashes throughout the body,
वॉमिटिंग एंड नोसिया, स्टोमक में हो सकता है, उल्टी हो सकता है, नोसिया मतलब सर चकराना, and joint pain, bone pain, muscle pain. These all symptoms will be there for dengue. Now डेंगू का एक वैसा ही क्लोजली रिलेटेड एक और डिजीज होता है, उसको हम लोग बोलते हैं चिकनगुनिया. दिस इज द नेक्स्ट डिजीज विच इज चिकनगुनिया. अगेन द कॉजेटिव एजेंट इज ए वायरस, चिकनगुनिया वायरस. उस वायरस का नाम ही है चिकनगुनिया वायरस. एंड द मोड ऑफ ट्रांसमिशन अगेन द सेम, फीमेल एडीज मॉस्किटो. ठीक है, चिकनगुनिया डेंगू क्वाइट सिमिलर होते हैं इन देयर अफेक्टिंग मोड. तो ये वो स्पेसिफिक मॉस्किटो है, फीमेल एडिस मॉस्किटो, जो इस दोनों के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है. डेंगू भी वो ट्रांसमिट करता है, एट द सेम टाइम चिकनगुनिया भी वही ट्रांसमिट करता है. सिम्टम्स फीवर, जॉइंट एंड मसल पेन, फैटिग्स, रैशेस एटसेट्रा. तो यहाँ पे आप देखोगे कि दोनों के सिम्टम्स से करीब करीब सेम है. सिर्फ डेंगू में ये है कि इंटरनल ब्लीडिंग होता है, विच इज नॉट सीन इन केस ऑफ चिकनगुनिया. एंड इन चिकनगुनिया फैटिग विल बी ऑब्जर्व. तो डेंगू में भी होता है फैटिग, फैटिग इज देयर बट नॉट वेरी मच प्रोमिनेंट काइंड, यू कैन से. ठीक है. So students, this is about all the different kinds of common diseases that occurs in human population. So with this we complete the topic of human diseases. In the next class we'll move on to immunity and the immune system. Thank you everyone.